All right, everybody. So today we are going to start our topic, which is fifth topic, technically according to the syllabus, and it is ordering. And we are going to study the four operations as well. And I am going to start indices as well today because ये बहुत छोटे छोटे topics हैं और काफी सर सारे एक मतलब नहीं होते जी। सर एक क्वेश्चन है। जी बेटा प्लीज बोलें। सर सर आपने हम कल लोगों ने परसेंटेजेस स्टार्ट हम लोगों ने परसेंटेजेस स्टार्ट। ओ यस 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 यस। तो हम लोग इसको थोड़ी देर के लिए वेट कराते हैं थोड़ा सा, ठीक है। थैंक यू सो मच। ये किसने बताया मुझे? सर यमुना। यमुना, थैंक यू सो मच। बेटा कल हम लोगों ने परसेंटेज स्टार्ट किया था तो हम उसको बीच में छोड़ नहीं सकते, तो लिहाजा वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विद दैट टॉपिक, ठीक है। हमें उसी टॉपिक को कंटिन्यू करना है अभी। सो काइंडली प्लीज पे अटेंशन। Yesterday I started the topic in the very last few minutes of the class, and I just gave you an idea that what a percentage is. And before going to proceed, Vadan, you were asking something, आप कुछ पूछ रहे थे। जी सर, मैं कह रहा था कि कल आपने एक वर्कशीट सेंड की थी ना, जी तो बिल्कुल। उसमें पहला वाला क्वेश्चन जो था उसमें हम्म। एक तो जो वो फ्रैक्शन था वो तो रिकरिंग था ना। वो दूसरा ठीक है। फ्रैक्शन ऐसा था कि वो कैलकुलेटर में डालो तो उसमें लाइक फॉर एग्जांपल समथिंग 0.55 और उसके बाद कुछ नहीं था, तो वो तो रिकरिंग नहीं होगा ना। अच्छा देखें, ऐसा है ना, नहीं वो रिकरिंग नहीं होगा ना, बस फिर स्टॉप हो गया ना, बस ठीक है, फिर। ठीक है, हाँ हाँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, रिकरिंग का मतलब ये है कि कैलकुलेटर की स्क्रीन के ऊपर नंबर्स आते रहें आखिर तक, ठीक है। ठीक है, ठीक है सर, सही। चलें, अब आते हैं जी परसेंटेजेस के ऊपर। परसेंटेजेस हम लोगों ने कल स्टार्ट किया था। आई स्टार्टेड द परसेंटेजेस यस्टरडे, and the typical formula since our childhood we study that it's part divided by total multiply by 100. And why percentage is in maths में percentage क्यों है? मैथ्स में परसेंटेज इसलिए दी गई है बिकॉज इन ऑर्डर टू ईज द कैलकुलेशन। We took an example of two students. Then one student he got 16 out of 20. He got 4 less than the total, and the other student he got 3 less than the total. It means that 7 out of 10. But when we found that 4 less than total was 80%, and when 3 less than total it was 70%. So technically student number 1 he got A grade, and student number 2 he got B grade, according to the simple mathematical calculations. Understood everybody or not? Yes or no? बेटा मेरी आवाज आ रही है सबको? यस सर। यस सर। तो बेटा टाइमली यस बोला करो, ठीक है। Okay, now beta, we need to understand that there are few typical formulas for the percentages, and we need to understand that what those percentages are. So the famous percentages in O levels and IGCSE. ठीक है? Famous percentages in O levels and IGCSE. The first one is percentage profit. Second one is Yamna, percentage loss. Third one is Yamna, percentage discount. सर Agree? रिकॉर्डिंग स्टार्ट है, आपने बोला था याद दिलाओ। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, रिकॉर्डिंग हमने स्टार्ट कर दिया था। फोर्थ वन इज परसेंटेज इंक्रीज। फिफ्थ वन इज परसेंटेज डिक्रीज। ये फेमस है, अच्छा ये पेपर में आते रहते हैं। वालेकुम अरोम, हाउ आर यू? These are few famous percentages which I'm going to write: percentage profit, percentage loss, percentage discount, percentage increase, percentage decrease, something like that. Remember one thing, that all these percentages they will follow the same typical formula which we were studying since beginning, which was part divided by total multiply by 100. Understood everybody or not? They will follow the same pattern, which is part divided by total multiply by 100. Now try to understand that how to make a formula. Everybody please pay attention. I'm going to talk in a very slow tone now, so please pay attention. It says that percentage profit. So beta, according to the formula, I should have part divided by total multiply by 100 in every formula. Do you agree with me or not? क्या सब में ये होना चाहिए कि नहीं? यस Yes सर। or no? यस। Every formula must have part divided by total multiply by 100. Do you agree with me or not? Now remember one thing.
You are finding percentage profit, so better write profit in front. Write what? Profit in front, and write old below. Is this clear or not? And old or slash CP means cost price. For example, if it is percentage loss, तो सामने आप लिखें loss, फिर नीचे लिख दे old slash cost price. फिर सामने लिखते हैं परसेंटेज डिस्काउंट, तो अब आप यहाँ पे आप लिखें डिस्काउंट, नीचे लिखते हैं ओल्ड. परसेंटेज इंक्रीज, सामने लिखें इंक्रीज, नीचे फिर लिख दे ओल्ड. परसेंटेज रिडक्शन, परसेंटेज डिक्रीज, सामने लिख दें बेटा डिक्रीज और नीचे लिख दें ओल्ड. अंडरस्टूड और नॉट एवरीबॉडी? Yes. Okay, now I'm going to make the sense of these formulas, that why we use these formulas. So kindly please pay attention, all of you. You can see one thing, I'm going to develop few cases here. So case number one. Case number one is profit case. Profit case. It's a scenario where in which I'm going to make some profit, right? So better try to understand, please. You can see one thing, that I am going to make some cup here. And my old students, they are tired of this cup. I should learn that how to make another diagram now. For example, I bought this cup for example, $10. And the selling price of the cup is, I am going to make a profit here. So it is $15. And the demand of the question is find percentage profit. Find what? Percentage profit. So Vadan, I know that percentage profit, the formula should be part divided by total multiplied by 100. Do you agree with me or not? यस सर, आई एग्री सर. बार बार Okay. बिजली जा रही है, तो अगर मैं क्लास बंद हो जाए तो फिर माइंड ना करे. ये बेटा आज बारिश हो रही है ना, तो बहुत सारे बच्चों का ये प्रॉब्लम है. सो इंशाल्लाह ताला सब ठीक होगा. So percentage profit is equals to profit divided by cross price multiplied by 100. Now beta, I need to understand that how much my profit was. So beta, profit was 15 minus 10, which was $5. Agree? So $5 was the profit, and cost price of the cup was $10. Multiply by 100. I can cancel this zero with this zero. It means that I made 50% profit. Is this clear or not, everybody? Yes or no? Yes. And beta, we are familiar with this thing. We are familiar with this thing, that the selling price, whatever we decide, it is the combination of two things. It is the combination of the cost price and also the profit. Agree or not? So Yamna, I can see that the cost price is always 100%. I got 50% profit. It means that the selling price was 150%. Understood or not? Yes or no? Yes. Okay. Now we are going to proceed with this for the second case. And the second case is loss case. So second case is loss case. Loss case. I am going to make a cup here. Let me make a loss now, okay? So cost price of the cup was again same $10, but I'm going to sell the cup with a loss now. So it should be less than 10, which is for example 7. So my loss is how much? My loss is 10 minus 7 is how much? 3. Agree everybody or not? So examiner is asking percentage loss. So formula should be loss divided by old multiplied by 100. So beta, Yamna, you know this already, that loss is 3. So old price would always be a cost price. Agree? Because the cost happens before the selling. So that would be 10 multiplied by 100. So 0 and 0 cancel. So 3 times 10 is 30% loss. Is this clear or not? Yes. Yes Sir. or no? Understood? Understood Yes. everybody or not? Yes. Vadan, any problem so far? नो सर. All right, proceeding. Now, beta, we are going to make a third case. Third case was for the percentage discount and very much important from the exam point of view.
Percentage discount, it should be equals to discount divided by old multiply by 100. Now, please pay attention, everybody. I'm going to make an add here. For example, the same cup which we were selling few minutes before, this cup was, for example, $10, agree? And now there is a cross here and it is written on the wall that now $6. So it means that this is a add here, agree or not? Yes or no? Technically, Yamna, this $10 was old selling price, agree? Yes, sir. And this $6, it is new selling price, agree? Yes. Now you can see one thing. The examiner is asking what is percentage discount. So let's see that how much discount you got. First of all, you got $4 discount, agree? So the percentage discount would be $4 divided by old one. Okay, which one is old, the 10 or 6? 10. Good job. Divide by 10, multiply by 100, cancel 0 0. It means that in terms of percentage, you got 40% discount, which is a huge discount. But if you see $4, it's not that much huge. Agree or not? Agree or not, beta? Yes, sir. Okay. The fourth case is of increase. Fourth case is of increase. And we usually see these things in Pakistan, percentage increase. So Vadan, the formula should be, Vadan, formula kya hoga? Vadan, what should be the formula? सर वो दो चीजें डिवाइड होंगी ना और फिर मल्टीप्लाई कौन बाय सी दो चीजें? ऊपर क्या लिखूं मैं? 100 सर ऊपर वो लिखे मतलब जो आया है आपका नहीं, इसका मतलब है यहाँ पे परसेंटेज इंक्रीज लिखा है ना, जी सर तो सामने भी मैं इंक्रीज ही लिखूंगा। ओके, वही सर मैं कह रहा हूँ कि वो लिखे जो मतलब हाँ, अब आप ये ना बोला करें आइंदा से परसेंटेज डिस्काउंट तो डिस्काउंट डिवाइड बाय ओल्ड, परसेंटेज लॉस तो लॉस डिवाइड बाय ओल्ड, परसेंटेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय प्रॉफिट डिवाइड बाय ओल्ड। ठीक है, ठीक। ओके। इंक्रीज एंड डिक्रीज, अब एक ऐसा काम करेंगे, वी विल मेक अ केस हियर एंड वी विल डेवलप दैट वी विल इंक्रीज अ प्रोडक्ट प्राइस। ठीक है, सो ओल्ड प्राइस of petrol, for example, is rupees 260, and the new price of petrol is, for example, rupees 300. Increase happened, everybody, or not? And we can see Yes. that increase is 300 minus 260, which is 40 rupees increase in the price. Let's see that how much this 40 rupees in terms of percentage. So percentage increase is equals to increase, which is 40, and old price of the petrol was 260, multiply by 100, so 0 and 0 cancel. 400 divided by 26 is how much? Because 4 multiplied by 100 was 400. So 400 divided by 26 is how much, bacha? What is 400 divided by 26? 15.38. 15.38. So I'm going to write 15.4%. The price of the petrol increased. So we can see that in terms of rupees, that was a more increase, but in terms of percentage, it was just 15.4%, which is technically very bad for an economy like Pakistan. Is this clear or not? Yes or no? Yes. Let's see the case which is percentage decrease, which we do not see in Pakistan. It is decrease divided by old multiply by 100. Beta, do you know any example in which the price of something has decreased? Any example? So the old price is, for example, of any product, for example, 1000, and the new price of the product, it should be less than the previous price. So for example, it is rupees 800. So decrease happened here, agree or not, Vadan? So decrease is 1000 minus 800, which is 200. So percentage decrease would be 200 divided by old one was 1000, multiply by 100,
Then I can cancel these two zeros like that. Agree? And I can cancel this zero with the upper zero. So 20% is the answer for the percentage decrease. Any problems so far, everybody? No, Any sir. problems so far? Zaria, do you have any problem? Walaikum assalam, Saim. Thank you so much. Okay, these 5 were very much important from Cambridge exam point of view. So that is the reason I wanted to discuss them. And we are going to have some question on percentages as well. So let me show you how to get a worksheet. Please pay attention. Now see, I am going to my browser now, and how to get an easy worksheet first of all. Okay, easy one. So easy worksheet should be something like that. You should be writing percentages like that, and then Corbett math, because this is the first time. For example, let's say that you are studying, okay? The percentage Corbett math questions. You can see that non-calculator. Let's try non-calculator one. So it is non-calculator percentages. So let's send this in my notebook and we can practice that in there. Okay, import to current document. All right, we got it. So see, we got some non-calculator percentage questions. So let's do it today. So work out 50% of 46. So 50% of 46 means 50 divided by 100 multiplied by 46. Is this clear, everybody, or not? सबको समझ आता है ये बात? Yes, sir. All right. So beta, सबसे पहले I will cancelling 0 0. Now I can see that I got 5 by 10 multiply by 46. This is my recommendation. Do single cutting in single step. Okay. I cancelled 1 0. I could have cancelled 5 and 10 in that step as well, but I will not agree because it can create an error. So 5 ones are 5. 5 times 2 is 10. So it would be 46 divided by 2, which is 23%. It means that, sorry, 23 is the answer, not 23%. Because we were finding 50% of 46, and we know that 50% of something is the half. Agree or not? 50% means half. Agree or not? So the shortcut was 46 divided by 2. Agree, Yamna? Yes, Laluna? sir. Aleen, समझ आइए बेटा? Yes, sir. Okay. Now, beta, now they say that there are 30 students in a class. Beta, there is a class. And remember that, for example, this is class. And there are total 30%, 30 students. There are total 30 students. And out of 30 students, 10% of the students, they are left-handed. So better remember one thing, that 30 is total 100%. Yes or no? Agree or not? So better 10% of 30 would be 3. Agree or not? 10% of 30 would be 3. Yes or no? Shortcut. Yes, So sir. 90% of 30 would be 27. Agree or not? 90% of 30 would be 27. Why? Because 3 were left-handed. So 27 would have been right-handed people. Right, Vadan, or not? So they say that how many students in the class are left-handed. So हमने तो दोनों निकाल दिए हैं. तो 10% of 30 means 3. और अगर आप इसको पिक नहीं कर सकते तो आप ऐसे करें कि 10% of 30. फिर आप इसको लिखोगे 10 by 100 of 30. तो 0 एक यहाँ पे काट दो, एक 0 यहाँ पे काट दो, तो 1 3 जा 3 बचा. तो Vadan 3 would be the answer. Agree or not? Arom? Agree or not? Aleen, do you agree with me or not? Mushkan, can you hear me? Yes, sir. Acha. Then they say that beta, question number 3, a bag contains 800 sweets. 25% of the sweets are red. Work out how many red sweets are in the bag. It is 25% of 800. So beta, remember one thing. Let's make a quick recap. Please make it quick. So this is 800, 50% is half. There are total 800. So beta, you can see that 25%, finding 25%, 50% and 100%. This is very much easy for all of you, because 25% of something means divide that number by 4. Agree? Because we know that total is 100%. So 25%, 25%, 25%.
and 25%. These all will make 100%. Do you agree with me or not, Laluna? Yes, sir. So it's a shortcut that you divide 800 by 4, you get a 25% straight away. And if you want to proceed with the steps, so the steps are 25 by 100 multiply by 800. So 0, 0 cancel, 0, 0 cancel. And you know that 25 times 8 is 200. And Mushgan, if I have divided 800 by 4, I would have got 200 already. Agree or not? Try to use your math skills, your shortcuts, because it will help you a lot in your career. Okay, is this clear? Yes, sir. All right, so now you can see one thing, work out 75% of 300. So better remember one thing, that 75% of 300, so mentally 50% of 300 is 150, and 50% of 150 would be the half of 150, which is 75. Agree, Laluna? I got the answer. Let's do that manually. So 75% of 300, agree? So 75% of 300, so 0 and 0 is cancelled, agree? So 75 times 3 is 225, agree? So 225 is the 75% of 300, and the remaining 75 we found was 20. Remaining 75 was 25% of 300. So it means that demand of the question is 75%, or 75% is 225. Is this clear, everybody, or not? Ramin, is this clear to you? Ji, sir. All right, proceeding. Work out 20% of 90. So please mental math. 10% of 90 would be 9. So 20% of 90 would be 18 or not? Anyone having any confusion in this? Any confusion in this? No, sir. And the shortcut is, and if both the numbers, you can see that they are ending with here with 0, agree? So Arom, I can cancel this 0 with this 0, so 2 9s are 18. That is straight away the final answer. Is this clear or not? Yes, sir. Okay, so that is the shortcut. Work out 80% of 40, both are ending with 0. I can cancel with this 0, so 8 4s are 32. So 80% of 40 is also 32. Vadan, do you understand this or not? Vadan, do you understand this or not? Aluna, Musgan, Taimur, Zaria, beta. Ji beta. Yes, sir. Sir, Zaria, can you Vadan hear? isn't in class. Okay, yes, he texted that he has no internet and electricity right now. Zaria बेटा आपने नो लिखा है बेटा, नो किस लिए लिखा है जरा भी बताएं मुझे. Zaria, can you hear me? All right. मैं चार्ट देख रहा हूँ, आप टाइप कर सकते हैं. A bag of sugar contains 420 grams and a special offer packet contains an extra 15%. Work out how much extra sugar is in the special packet. So first of all, we need to find out for 15% of 420 and to see that what that 15% of 420 is. So 15% of 420. So let me cancel that. So 15 times 42. So this is tricky, but not that much tricky. Okay. So we can do that with the table number 5. So I can cancel 15 and 10 in table 5. Can I, everybody, or not? So I can write 3 and I can write 2. So it is 3 by 2 times 42. So 2 ones are 2 and 2 times 21 is 42. So 3 times 21 would be 63 grams. Understood or not? Which is 15% of 420. So a special offer packet contain 15% extra. So special offer packet. So the special packet would have 420 grams plus 63 grams. So 420 plus 63 would be 483 grams. Am I right, everybody, or not? Yes or no? Yes, sir. Sir. Zaria बेटा Sir. आपने नो लिखा था तो any problem, so please tell me.
If you can turn on your mic, so that would be very handy for me. सर Yeah, bacha. सर 63 ग्राम्स तक समझ आइए, इसके बाद ये जो आपने वर्क किया है स्पेशल जो ऑफर का आपने की, ये जरा दोबारा बता दें। कहता है वर्क आउट हाउ मच एक्स्ट्रा शुगर इज इन द स्पेशल ऑफर पैकेट। ठीक है, तो जाहिर सी बात है, देखो ये जो ओरिजिनल पैकेट था उसमें 420 ग्राम ऑफ शुगर था। ठीक है, कोई स्पेशल ऑफर होगा, जैसे फॉर एग्जांपल क्रिसमस होता है या ईद है, तो उन्होंने ऊपर लिख दिया है कि एक्स्ट्रा 15%। तो आप पहले ओरिजिनल का 15% निकाला हमने, 420 का 15%, तो वो 63 ग्राम आया यमुना। ठीक है, तो अब वही जी सर। 63 ग्राम उस ओरिजिनल पैकेट में मैंने ऐड किया ताकि मुझे स्पेशल ऑफर का पैकेट पता लगे कि उसमें कितने ग्राम शुगर मौजूद है। अंडरस्टूड? यस आई होप यू गॉट द आइडिया। यस सर। दीज क्वेश्चंस आर वेरी बेसिक। अच्छा, ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, ओ लेवल्स में इतने आसान क्वेश्चन भी नहीं होते, लेकिन अगर आपको इजी क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं आएंगे तो आप डिफिकल्ट भी नहीं कर सकते फिर। ठीक है, ओके। Freya says 50% of 30 is equals to 30% of 50. So Freya is correct. Okay, so you can see that one thing, that 50% of 30 means that 0 0 cancel, 5 3s are 15, it's 15, and 30% of 50, 0 0 cancel, and 3 5s are 15, so it's correct. Yes or no, everybody? Yes, sir. Understood? Aisha, Ji, sir. is this correct? Sir. All right, look at question number 9, please, all of you. Abdullah, you can see one thing, that Logan has 2 tubs of beads. 5% of 600 beads in a tub A are yellow. So wait a minute, first of all I'm going to read the question, and with reading I'm going to solve it. It says that 5% of 600 beads in tub A, they are yellow. So 5% of 600 would be 30, obviously, because 10% of 600 is 60, so half of 60 is 30, so 0 0 cancel, so 5 6 are 30. See, we got 30 yellow. Agree? Yes, Yamna sir. samajh aayi? और फिर the question is 4% of 900, Yes. 4% of 900 in tub B they are yellow. So beta 4% of 900 would be 0 0 cancel, 4 36. 9s are 36 yellow. Okay, now they say what? Work out the total number of yellow beads in the batch. So total beads would be 30 plus 36, which would be 66 yellow beads. Understood, everybody, or not? Yes or no? Yes. Yes, sir. Good job. Proceeding. अब जरा देखें जी, अब ये यहाँ पे जरा थोड़ी सी अब जरा थोड़े से क्वेश्चन जो हैं ट्रिकी होना शुरू हो जाएंगे. A new car is priced at 7,500 pounds. In a sale, it is reduced by 20%. Calculate the reduction in price. So first of all, it's a percentage reduction it is given. Beta, we know that percentage reduction, I know that technically that percentage reduction, it should be equals to reduction divided by old price of multiply by 100. I have percentage reduction available, which is 20%. Reduction is not available. I do not have the value reduction. And a new car is priced at 7,500 multiply by 100. Agree or not, everybody? I have this scenario built in front of you. You can see one thing here. Agree or not, everybody? Yes. But remember one thing. If you proceed this way, it can create a lot of confusion. It can create a lot of confusion in your mind. So please try this method later, but try to attempt the method which I'm going to show you. Please pay attention. They are saying that a new car is priced at 7,500. In a sale, it is reduced by 20%. So remember one thing. First of all, we got the idea that 7,500 is the original price, which is 100%. Do you agree with me or not? Yes or no? Yeah. Okay, that is actual price of the car. Okay. In a sale, it is reduced by 20%. In a sale, it is reduced by 20%. It means that
I am going to find out 20% of this thing. Agree or not? Agree or not? So now Yes. now the scenario is developed that what you are going to do, because sometimes students, they do not know that a percentage is in division, but they do simple multiplications. So that is the reason you lose easy marks in the paper. So try to follow such activities whenever you are solving the question. So let's solve the question now, because we are done discussing. Okay, a new car is priced at 7,500 pounds. In a sale, it is reduced by 20%. Calculate the reduction in the price. So find 20%. The simple thing is find 20% of 7,500. So 20% means 20 by 100 multiply by 7,500. Ramin, cancel these two zeros. So 20 times 75. Calculator is not allowed. So beta, can I convert 75 into 70 plus 5? हाँ जी, मेंटल मैथ्स से कर रहे हैं ना थोड़ा सा। वदान समझ आई? अच्छा, वदान तो है ही नहीं। 2 7s are 14, so it would be 1400 plus 20 times 5 is 100, so it would be 1500. So 20% of 7500 is 1500. So calculate the reduction in price. So we got the reduction in price is 1500. They are not asking about the new selling price. Yamna, if the demand of the question was tell us that what is the new selling price, so then you have to write 6000, because 7500 minus 1500 is equals to 6000. Agree? Yes. सर उससे नहीं कर सकते जो आप पहले रेशियो मेथड करवा रहे थे कि 75% 100% दे रहे हैं x 20%। वो भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको सिंपल तरीके से समझा रहा था कि कितने मल्टीपल तरीके मौजूद हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के। समझ आई? अच्छा जी, ठीक आपको है। आपको तीनों में से जो मेथड भी इजी लगे आप वो कोई भी मेथड प्रोसीड करो, क्योंकि कैम्ब्रिज में दे चेक कॉन्सेप्ट्स, दे डू नॉट चेक द रट्टा। जी बेटा, सर आप ये जो पहला वाला मेथड था, आप इससे भी एक दफा इसको सॉल्व कर देते हैं, कौन से वाले मेथड से? फॉर्मूले वाले से कि वो क्रॉस फायर वाले से? फॉर्मूला वाला। देखो जी, परसेंटेज रिडक्शन आपको गिवन है, ठीक है। फॉर्मूला लिख देते हैं, परसेंटेज रिडक्शन, ठीक है। परसेंटेज रिडक्शन इट इज इक्वल्स टू रिडक्शन डिवाइडेड बाय ओल्ड मल्टीप्लाई बाय 100। मेरा बेटा जरा एक चीज जरा नोट कीजिएगा, हमारे पास परसेंटेज रिडक्शन यहाँ पे 20 लिखी है। रिडक्शन को मैं आर कहता हूँ, ओल्ड को मैं कहता हूँ 7500, और यहाँ पे हो रहा है मल्टीप्लाई बाय 100। इज दिस क्लियर और नॉट? यस यस और सर। अच्छा, अब देखें यहाँ पे हमें इसको सब्जेक्ट मेकिंग करना है, तो 0 0 कैंसिल, तो 0 0 कैंसिल हो गया। एग्री? तो 20 मल्टीप्लाई बाय 75 करें तो ये आर के बराबर आएगा, और आर हमारी थी रिडक्शन। तो क्या ये भी 1500 नहीं आ रहा? बिकॉज 20 यस सर। मल्टीप्लाई बाय 75 वहां पे भी आया था ना, देखें थर्ड स्टेप में। आप यस कोई भी सर। मेथड फॉलो करो, सेकंड मेथड, आप कोई भी मेथड फॉलो करो, योर मेथडोलॉजी शुड बी राइट। अच्छा, मेथडोलॉजी राइट होने चाहिए, वरना पूरा मोए मोए होगा क्वेश्चन। अंडरस्टूड और नॉट? यस सर। रामीन समझ आ रही है बेटा? तैमूर, डू यू अंडरस्टैंड दिस? Sir. यस और नो? Yes, sir. ऑलराइट। तुम क्या कर रहे हो ये बताओ मुझे। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करूँ आपके साथ। हाँ, इतने तुम अच्छे। 1400 स्टूडेंट्स अटेंड अ स्कूल। जी 1400 सर, आ गई। स्टूडेंट जो है, रामीन समझ आ गई बेटा? 1400 स्टूडेंट दे अटेंड अ स्कूल। 51% of the student travel to school by bus. Agree or not, Ramin? 51% जी सर। of the student that travel to school by bus. Work out how many student travel to school by bus. So first of all, remember one thing. 51% means 51% means 51 by 100 multiply by 1400. Calculator is not allowed, Asha, so be careful. So 0 0 cancel, 0 0 cancel. So technically I am going to do 51 multiply by 14. So 51 multiplied by 14 with calculator, it is difficult, so I'm not interested. So I can do one thing. Can I write beta 50 plus 1 multiplied by 14? Is this the same thing or not?
Yes or no? Laluna, is the same thing or not? Yes, sir. Okay, Laluna, 14 times 5 is very tricky. Agree? Yes, sir. Come on, shame on me. 14 times 10 is 140. So half of 140 is 70. Come on, yaar. हाँ जी, start laughing. 14 times 5 is very tricky, right, Laluna? Uh-huh. फिर अभी भी Okay, no, it's not. It's not, because 14 times 10 is 140. So half of 140 is definitely 14 times 5, which is 70. So let's add extra 0 because it was 50, not 5. Agree? Plus 14 times 1 is 14. So 714 people, they traveled to school by bus. Understood, Saim and everyone? Yes. Good job. जी बेटा, समझ आया सबको? चलें, अब जरा जल्दी बताएं बगैर कैलकुलेट किए। 3% of 600. वैसे एक क्वेश्चन है, जरा थोड़ा ड्रिल करते हैं। आलीन, व्हाट इज 1% of 600? पता नहीं सर। अच्छा ये बताओ 10% of 600 क्या होगा? पता नहीं सर, मुझे अच्छा, इतना तेज नहीं होता। अभी इतना तेज मैं तुम्हें कराऊंगा, ठीक है? थैंक यू कि आपने मुझे बता दिया। अब आलीन तेरी बात सुने। जी सर। बेटा याद रखिए आपने, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने 10% किसी भी नंबर का फाइंड आउट करना है ना, ठीक है, तो आपने एक जीरो उड़ाना है, ठीक है? ओके सर। अब देखें, अच्छा 10% of 600 would be 60। हाँ, and 1% of 600 would be 6। चलें, गुड जॉब। अब आते हैं थोड़ा सा एडवांस पे, ठीक है? ओके सर। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा एडवांस करते हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, थोड़ा मेंटल मैथ स्ट्रॉन्ग करते हैं, ठीक है? अच्छा अलीन, 1%, मुझे बताएं 1% ऑफ 100 ये क्या होगा? 1% ऑफ 100 क्या होगा? 100। उड़ाएंगी 1 0 या 2 zeros? 10। नहीं, अब जरा गौर करें प्लीज। आप सिर्फ इतना याद रख लो कि 10% के लिए आप एक जीरो उड़ाओगे। एग्री? यस। तो 1% मैं फाइंड आउट करना चाह रहा हूँ, तो बेटा 10% ऑफ 100 वुड बी 10। डू यू एग्री विद मी और नॉट? यस सर। सो 1% वुड बी 1। एग्री? यस सर। अब जरा यहाँ पे गौर करें बेटा। आलीन, ये क्वेश्चन का जवाब आप ही देंगी, मैं नहीं दूंगा। बेटा ये कहता है 3% ऑफ 600। तो एक बात मुझे बताओ कि 1% ऑफ 600 क्या होगा? 6 हमने किया। वेरी गुड। तो यहाँ पे 3% मांग रहा है, तो 6 3 18 होता है कि नहीं? यस सर। तो इसका आंसर 18 आएगा। हम रफ वर्किंग में चेक करते हैं। 3/100 मल्टीप्लाई बाय 600, तो क्या 0 0 काट दें, तो 6 3 18 आ रहा है आलीन? यस सर आ रहा है। तो आ जाएगा, ठीक है, हो जाएगा, ऐसा ऐसा होता है। चलें, अब अगली बारी किसकी है? अगली बारी है तैमूर आपकी। जी सर। Last month 15% of the patients were late for their appointments. What percentage of the patients they were not late for the appointments? 85%. Very good. Total is, Aleen, total is 100%. ठीक है? यस सर। 15 late, they were 15%. So obviously not late are 85% because total 100 है ना, ठीक है? यस सर। ठीक है, तो 85 plus 15 is 100. So not late are 85. Okay. Aisha, 920 patients had appointment last month. Work out how many patients were late for the appointment. So Aisha, can you please tell me what is the percentage of late comers? 15%. All right. So Aisha, 15% of 920. Aisha, there is a question from you. जी sir. What would be the 10% of 920? Laluna, don't help. पता नहीं sir. Okay. एक जीरो उड़ाओ ना बेटा। 10% of 920 के लिए आप एक जीरो उड़ा देना। 92. 92. Agree? जी sir.
No. तो 15% कितना होगा? 92 का हाफ होता है 46, तो 92 प्लस 46 करेंगे तो आंसर आएगा। ये मेंटल मैथ्स है, ये जी आहिस्ता आहिस्ता इंप्रूव होता है, आप प्रैक्टिस करोगे तो इंप्रूव करोगे, ठीक है। जी सर। मेथोडोलॉजी के जरिए अगर इस क्वेश्चन को किया जाए तो 15% ऑफ 920, कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, ठीक है। जी So सर। first of all, we will cancel 1 0, okay, and I will write the fraction once again, Yamna, because to avoid any error in the paper, ठीक है बेटा। Okay, now cancel 15 and 10 with table 5. That would be 5 3s are 15 and 5 2s are 10. Arom, it would be 3 by 2 times 92. Arom, I can cancel 2 and 92 in table number 2. Agree? So that would be 46. So 3 times 46 is tricky, right, Laluna? No. Thank God, thank God. So it would be 3 times 40 plus 6. Thank you. So 3 times 40 would be 120 plus 3 times 6 is 18. Okay. 120 plus 18 is 148, right, Ramin? Ramin, जी सर। 120 plus 18 is 148? 138 सर। 138. मैं चेक कर रहा था कि तुम एक्टिव बैठी हुई होगी नहीं। All right, good job. Proceeding. Mary wins 400 pounds. She gave 50% to her mother. Oh, 50% to the mother. So Abdullah, 50% means half. Agree or not? जी सर बिल्कुल। So 200 pounds तो माँ के पास चले गए. Agree? जी जी Mary gives 20% to her sister. So beta 10% of 400 is 40. So 20% would be 80 or not? जी बिल्कुल बिल्कुल 80%। 20% of 400 would be 80 pounds. She keeps the rest. It means that she is keeping the 30%. Agree or not? यस Agree or सर। not? जी सर। So she is keeping the rest. So let's see that the total was 400. She gave 200 to mother and 80 pounds to her sister. So she is left with 120 pounds. Agree, यस Yamna? सर। So the mother's Yes, sir. mother share is 200. Okay. Mary share is 80. My Mary gives 20. Okay, sister share is 80 and Mary share is 120. If you add all of them, it's 400. Agree or not? सर जी मेरा बेटा। जब उसने आधे अपनी मदर को दे दी तो पीछे 200 रह गए, तो हमें 20% ऑफ 200 नहीं निकालना चाहिए? मेरा बेटा ऐसा है ना कि यहाँ पे देन नहीं लिखा, अगर THEN लिखा होता ना, ठीक है, जी तो फिर मैं 200 का 20% लेता, ठीक है। ओके। आपने इंग्लिश को समझना है थोड़ा सा। जी साइम, आपका क्वेश्चन। सर इसमें वर्किंग शो करने की जरूरत है? बेटा 3 मार्क्स है ना, तो ये जो ऊपर हाफ लिखा हुआ है ना मैंने 200, जी ये जी। भी मैथ्स में मेथोडोलॉजी में आता है, ठीक है। अच्छा। अगर एक स्टूडेंट ये पिक कर सकता है ना कि ये 50% हाफ है, तो ये मेथोडोलॉजी आपका कॉन्सेप्ट है, एग्जामिनर वही तो चेक कर रहा है पेपर में। और अगर मैंने डायरेक्ट आंसर लिख लिया तो फिर? बेटा डायरेक्ट आंसर लिखोगे तो 3 मार्क्स है ना, और यहाँ पे ये नॉन कैलकुलेटर क्वेश्चन है, ठीक है। हम्म। तो यहाँ पे देखिए 3 मार्क्स हैं, तो 3 मार्क्स के लिए उन्होंने 3 आंसर्स भी दिए हुए हैं। कैन यू सी दैट? जी जी। तो तो ये आपको सारे 3 पूरे 3 आंसर मिलेंगे की मार्क्स हैं? जी। और अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे आंसर लाइन एक होती तो अब आपको 2 नंबर के लिए मेथोडोलॉजी शो करनी थी। अग्री? अच्छा। चलें, प्रोसीडिंग। Barry's salary is 28,000 pounds and he is due to get an increase of 5%. Calculate how much this increase will be. So that would be 5% of 28,000. So Yamna, the question is from you, 5% of 28,000. So Yamna, what would be the 10% of 28,000? Cancel 1 0. Yamna, Yes, sir. 10% of 28,000 would be 2,800 or not? Yamna, Yes, sir. can you hear me? 1,200. Yes, sir. It's 1,200. अच्छा, कैलकुलेट नहीं करना, मेंटल मैथ से थोड़ा सा सीखना है, ठीक है। फिर थोड़े परसेंटेजेस मैं स्ट्रॉन्ग बहुत करो वीक हूँ। तो खैर है, तो आहिस्ता कैलकुलेट आहिस्ता इंप्रूव करोगी ना, बताने की क्या जरूरत है। 100 कैसा है यार? देखें जी,
पहली बात तो ये कि आपने 10% ऑफ 28,000 फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो 10% ऑफ 28,000 जरा प्लीज 10 नहीं है, 5। मैं खुद मेंटल मैथ्स में कर रहा हूँ, थोड़ा सा समझ डालें, थोड़ा सा 5% निकालना मुश्किल होता है, ठीक है। ओके 10% निकालना बहुत आसान है, और 5% का मतलब ही हाफ ऑफ द आंसर होगा। एग्री? सो जरा चेक करें बेटा, मैं 0 एक यहाँ पे काटता हूँ, एक 0 यहाँ पे काटता हूँ, तो देखो 10 मल्टीप्लाई बाय 20 282 2800 आता है, राइट यमुना? Yes, sir. तो 5% होगा हाफ ऑफ 2800 विच इज 1400। अब हम मेथडोलॉजी से करेंगे और वही आंसर आएगा, जरा चेक करें। 5% ऑफ 28,000, तो 2 zeros cancelled, तो 5 times 280, so it is 5 times 280. So this is difficult, right, Taluna? Yes, sir. It's not difficult. It's not difficult. Well done, good job. So we are going to split it into pieces. 5 times 200 plus 80. Agree? So 5 times 200 is 1000. Do you agree with me? Yes, sir. And 5 times 8 is 40, so it would be 400. So 1400 is the answer. Agree? That increase would be 1400. Agree or not? Yes, sir. Thank you. Okay, 2 glasses contain orange juice. A 400 ml glass is 40% full, and a 300 ml glass is half full. Which glass contains less orange? So let's make 2 glasses here first to understand the question well. Okay, the capacity of this glass is 400 ml. Agree? And this glass has a juice till 40%, so less than half. Agree or not, Yamna? Yes, sir. Okay, so you can see one thing. So 40% of 400, so 40% of 400 cancel, shortcut apply करें तो 0 0 काटें तो 4 into 40 160 आ जाएगा। नहीं अप्लाई कर सकते तो परसेंटेज का सिंबल हटा के डिवाइड करें, ऑफ की जगह पे मल्टीप्लाई लगाएं और 2 जीरोस को कैंसिल कर दें फिर इसके साथ, तो 40 into 4 160 ml आ रहा है। एग्री और नॉट? एग्री और नॉट? Yes. ओके, फिर दूसरा ग्लास बनाएंगे। दूसरा ग्लास है 300 ml का, ठीक है। अब इसमें भी जो जूस है वो है अप्रोक्सीमेटली हाफ फुल है। क्या है बेटा? हाफ फुल है। तो हाफ फुल कितना होता है बेटा? 150 ml। एग्री और नॉट? हाफ ऑफ 300 is 150 ml. Which glass contains less orange? Okay, so which glass contains the less orange? Tell me, 400 ml glass or 300 ml? 300. 300 So the answer is 300 ml glass. Is this clear or not? Yes. तो ये जो हाफ फुल वाली Yes, बात sir. दोबारा समझाएंगे, मुझे समझ नहीं आई। बेटा वो कहता है ना 300 ml glass is half full, ठीक है। तो half of 300 ml is 150 or not? Agree or not? ये रामीन, अब आवाज तो दो ना बेटा। रामीन, I think इसके कनेक्शन में कोई इशू है, so kindly please pay attention. Which glass contains less orange juice? So 150 ml is less than 160, so 300 ml glass has less orange juice than the 400 ml glass. Work out 45% of 540, so 45% of 540, 0 0 cancel, so table 5 की कटिंग करेंगे अभी। 45 by 10 multiply by 54, so 2 and that would be 9. So 9 divided by 2 multiply by 54. So वदान अब हो नहीं, लेकिन यहाँ पे 2 ones are 2 and half of 24 is 27. So 9 times 27 is difficult, right Laluna? No, sir. So 9 times 20 plus 7, बेटा मैं तुम्हें सिखा के छोड़ूंगा। 9 times 20 is 180 plus 9 sevens are या 6 nines are क्या होता है? Sorry, 9 sevens are या 7 nines are 63. Yeah. So 180 plus 63 is tricky, but 180 plus 60 is easy. So 180 plus 60 is 240, so it is 243.
यमुना समझ आई बेटा? Yes, sir. मुस्कान, डू यू अंडरस्टैंड दिस? मुस्कान, डू यू अंडरस्टैंड दिस? ओके, उमर सर थोड़ा सा प्रेशर बेटा ये मैं लिखा हुआ है क्वेश्चन में, इट सेज दैट 45% ऑफ 540, तो 45% का मतलब है 45 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 540, ठीक है? तो हमने 0 0 कैंसिल किया, फिर लिखा 45 बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 54, फिर ऊपर टेबल 5 पे कटिंग की है, तो 5 9 are 45, नीचे 5 2 are 10, तो 9 बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 27। अब 2 और 27 को टेबल 2 में काट दिया मैंने, ठीक है? 2 और 54 को, तो 2 1 are 2 और हाफ ऑफ 54 is 27। फिर हमने 9 टाइम्स 27 को मल्टीप्लाई किया है, तो वो ट्रिकी बनता था, इसीलिए हमने 20 + 7 लिख दिया, ठीक है उमर? अंडरस्टूड? सर वो स्टेप ज्यादा थी इसलिए थोड़ा कंफ्यूज। वो स्टेप मैंने इसलिए ज्यादा किए हैं ताकि विदाउट कैलकुलेटर है, देखो यहाँ पे कैलकुलेटर नहीं है ना, चांस ऑफ एरर हो सकता है, तो इसलिए मैं सिखा रहा हूँ कि बगैर कैलकुलेटर पे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है? ठीक। अच्छा चलें जी, कहता है इंक्रीज 360 बाय 20%, इंक्रीज 360 बाय 20%। फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड इंक्रीज, increase is 20% of 360, so 20% of 360, so 0 0 cancel, 0 0 cancel, double of 36 is 72, so now increase it, so 360 plus 72, so 360 plus 70 is how much? 360, 370, 380, 390, 400, 410, 420, 430 and 432. Am I right, everybody? Yes, sir. Yes. So this is what? This is increased by 20%. Agree or not? Agree or not? Yes, sir. Yes, sir. Now they say that decrease 800 by 15%. So find 15% of 800 first. So 15% of 800, 0 0 cancel. मैंने आपको कहा था टेबल 8 याद करें, तो 15 टाइम्स 8 जो है वो 120 आता है, 120। ना वो कहता है डिक्रीज करें, डिक्रीज का मतलब होता है बेटा मैथ्स में माइनस करना, so 800 minus 120, so the answer would be 680. Understood everybody or not? Yes, sir. Thank you. Okay बेटा किसी को कुछ समझ नहीं आ रही तो पूछ ले, वरना इतने क्वेश्चन नहीं रहते। 20 21 22 23 24, ये टोटल वर्कशीट में कितने क्वेश्चन है देख लेते हैं। टोटल वर्कशीट में बेटा क्वेश्चंस हैं 36 और 20 तक तो हम पहुंच गए हैं जी। The price of a car tire is 140 and the price is reduced by 25%. Calculate the new price. So first of all, find 25% of 140. Calculator is still not allowed. 25% of 140. 0 and 0 cancel. 25 by 10. Arom, I can cancel in table 5. So it would be 5 5s are 25 and 5 2s are 10. So 2 and 14 can be cancelled. Okay, use extra steps because calculator is not allowed. So 5 times 7, because 2 1s are 2 and 2 7s are 14. 5 7s are 35. So that is the reduction which is going to happen. So the new price of the tire would be 140 minus 35. So it would be 105 pounds. Agree or not everybody? समझ आई बेटा सबको? Yes, सर sir. जी बेटा। सर अगर इसको हम फॉर्मूला से करें तो कैसे करेंगे? बेटा अभी आप ऊपर करके भी दिखाया है थोड़ा सा आपको, ठीक सर है? ये 100% से अगर माइनस करें तो ये बिल्कुल 25%। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो जो आप मेरी क्लास वाला तरीका इस्तेमाल कर रहे हैं वो भी आसान है। देखिए जी, दिस इज एन एक्स्ट्रा मेथड जो उमर ने बताया अभी आपको। सो काइंडली दोनों में से जो भी आपको सूट करे आप लोग उसको इस्तेमाल करें, ठीक है? एक्स्ट्रा मेथड, ठीक है बेटा। द प्राइस ऑफ द कार इज 140 पाउंड्स, ठीक है यमुना? सो दिस 140 इज 100% द ओरिजिनल, ठीक है यमुना? Yes, sir. ओके, द प्राइस इज रिड्यूस बाय 25%। अब एग्जामिनर मांग रहा है न्यू प्राइस, तो बेटा न्यू प्राइस जो होगी वो 100 में से आप 25 निकालते हैं तो वो 75% होगी। कितनी होगी? 70. अब आप इसको करें क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये आएगा 140 मल्टीप्लाई बाय 75% इज इक्वल टू 100% ऑफ एक्स। तो मेरा बेटा ये जरा देखें,
100% of x लिखूं या 100% x लिखूं? So बेटा we know that 100% x is 100, 100% of x is x. So बेटा 140 multiply by 75 divided by 100, तब भी आंसर आपका ऑलरेडी डायरेक्ट 105 आएगा, उसमें आपको माइनस नहीं करना पड़ेगा। ठीक है यमुना? Yes, sir. अब देखें, आपको एक बात तो पता होनी चाहिए मैथ्स में कि ये 75 by 100 जो है, दिस इज इक्विवेलेंट फ्रैक्शन टू 3/4। यस और नो? यस और नो? Yes, sir. सो आप डायरेक्टली 75 को 75 by 100 को 3/4 से रिप्लेस भी कर सकते हो। ठीक है, जी सर। ताकि छोटे नंबर्स आए, कटिंग इजी हो और क्वेश्चन जो है ना वो अच्छा हो जाए। तो फिलहाल के लिए मैं ये वाला मेथड जो है ना यहाँ से मैं इरेज कर दूंगा, क्योंकि अभी ये बेसिक परसेंटेजेस चल रहे हैं, आगे जाके हम इस मेथड के ऊपर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 21। Harry wants to buy a motorbike that costs 1400 pounds. He saves 40% of his wages each month. Each month Harry earns 500 pounds. So calculate how many months it will take Harry to save enough money. So he wants to buy this motorbike now. So first of all, we need to see that what is 40% of 500. So saving per month, Abdullah, it is 40% of 500. So 0 0 cancel. So 40 times 5 is 200. 200. Yes or no? Yes. So beta, we know that 1400 is the total cost of the bike. So 1400 divided by 200. So you can see that it would take 7 months. कितने months लगेंगे? 7. So it will take 7 months to save the money to get the bike. Agree or not? And this is simple arithmetics and percentages. इसमें कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है कि सर ये कैसे हुआ और वो कैसे हुआ। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 21 तक मैंने कर दिए हैं बेटा। टोटल 36 क्वेश्चन है, तो 15 क्वेश्चंस आपके होमवर्क हैं। ठीक है, आप लोग इसको ट्राई जरूर कीजिएगा। ठीक है, कोई क्वेश्चन ना हो पिक्चर लेके मुझे इनबॉक्स कर दो। ठीक है, Okay, sir. टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। ये मैं भिजवाता हूँ आप लोगों को, अभी आप लोगों की केमिस्ट्री की क्लास है। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। Allah Hafiz. अल्लाह हाफिज़।